Hello students, in last class we have discussed about the set and we have discussed about the different type of sets. Now today we discuss about the power set. What is power set? Basically power set is what? Power set is a form of all subset. It means collection of all subset is called a power set. When we make a all subset and we collect them, it's called a power set. Okay, it means the set formed by all the subset. Okay, collection of all subset, it's form a power sets. Then sets A is called power set. It means when we collect the all subset, then set A is called a power set of A. A is what? Subset. It is usually denoted by PA. Okay, or when we collect the all subset and the form of collection of all subset is denoted by PA. PA is called a power set. Okay, and the number of subsets in a power set is represented by 2 power n. A is here, A is a set, and small n is what? Number of element of a set, just like your subset. Okay, when we calculate the subset of any set, we also use this formula, that is 2 power n. That same here we calculate the all subset. It means firstly we calculate the all subset, and all the subset is represented by 2 raised to power n. N is what? Number of element on a given set. Therefore, first we calculate the number of subset, and after that we combine the all subset, that is represented by PA, and the PA is also called as power of sets. Now let's see one example of power sets. Here A is a void set. Void set means it is a null set or empty set, that is represented by phi. It means there is no element in the given set. It means very firstly we calculate the number of PA. It means the number of subsets in a PA. Power sets contain the number of subset, that is a PA. That is, we use the 2 raised to power n. The 2 raised to power n. N is what? N is the 0. That is a 0. That is a 0, and 2 raised to power 0 is called 1. It means there is a 1 sets in a power sets, and that is known as phi. Phi is what? A vacant sets. Okay, that is a 1 set phi. Phi is a sets, and itself that is a PA. PA is represented by a phi. Phi is what? Phi is here a here is a subset, or either we can also represent by this 2 brackets. This 2 brackets, it means that is a representation of phi. Phi is here, and that is a representation of power set. That is when we having a phi, that is a 0 element, and 0 element is represented by that. Okay, now we go for the second example. There is only 1 element, that is itself a 0 element. Okay, it is a phi. Phi it's a null, nothing elements, and that is a 0. 0 is the elements containing the set, that is a 0. Okay, first of all we calculate the NPA, number of power sets. Now, number of power sets is calculated by 2 raised to power n. Here n is 1. Why we write here 1? Because that is a 0. 0 is counting as a 1 elements. That is a 2 raised to power n. N is a 1. That's we get what? That's we get 2. Okay, now PA, how we represent the PA? PA containing the 2 subsets. So first is the phi and second is the 0 itself. It means first is represented by phi and second is what? 0. It means the 2 element phi. Phi is the null. Null is the subset of every set. Phi is a subset of every set. It means when we write the power set, when we write the subset, firstly we write there the phi. Phi is a subset of every set. Okay, so phi is a subset of every set, then that is the second one is the 0. 0 is making a subset of the 0, that is represented by these 2 curly braces. Okay, so that is a subset. It means the power set containing the two subset, first is a phi and second is the 0. It means there is a containing a 2 subset. Okay, next we see the third example. Third example is set A containing the AB. AB is a 2 element. Okay, so firstly we calculate the NPA. NPA is the number of subset in a power set, that is calculated by 2 raised to power 2, because the A and B is the 2 elements. Okay, that is a 2 raised to power 2 is the 4. Then we calculate the PA. PA, which is the first we go for the phi. Phi is the null set. Null set is a subset of every set, and after that we make the different subsets of different elements A, and after that B, and AB itself just like our subset. Okay, then we collection of the all subset is called power set, that is represented by phi. First is the A subset, second is the B subset, and that is the AB whole subset itself element. Okay, itself the set is also known as the subset, so that is a subset. Okay, so that is a collection of all subset, this is called the power set, and that is represented by PA. That's next we go for the next example, that is example number 4. 4 is the set A is represented by 1 2 3 4, and firstly we calculate the NPA. NPA is the number of power set. Number of power sets is represented by 2 raised to power 3. 2 raised to power 3. Why we write here 2 raised to power 3? Because we having the formula of 2 raised to power n of A. 2 raised to power 3. 2 raised to power 3 is 8. 1 2 3 4. 2 raised to power 3 is 8.
8. Then we calculate this power of set. Power of set that is represented by first is the 5. 5 is the set of every subset of the every set, that is a 5. After that 1 2 3 4 are the different, okay. Then we calculate only the 3, it means there is only the 3 elements, okay. After that otherwise we take the 2 raised to power 4. 2 raised to power 4 is the 16, okay. That we here 1 2 3, 1 2 3 is the 3 elements, then 2 raised to power 3, that is the 8, okay. We take the 1 to 3 elements, okay, only 3 elements. When we take 1 2 3 4, that is the 2 raised to power 4, that is the 16 subset, okay. So first is the 5. 5 is the 5. After that 1 2 3, okay. And there is no need of a 4 because we have removed the here the 4, that is the 5 1 2 3 1 2 2 3 and आपके पास में that is the 1 2 2 3 and there is the 1 3, that is a 1 3, okay. We can calculate, or after that the one more subset, that is a calculate 1 2 3 4 5 6 7 and the one last one is what? Last one is the itself is what? 1 2 and 3, okay. That is your whole power set, okay. Power set is a collection of all subset. We make the subset of these 3 elements 1 2 3, that is 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3. Either we can write the 3 1 and 1 2 3 is all elements, that is a 8 subset of the given sets. It means that is a power set. And how we calculate the power set? That is represented by PA. It's a part of a subsets, okay. That's our power set. So now we go for next is the universal set. What is an universal set? Universal set is what? Universal set is basically a collection of all sets. It means that is a we taught about to the AB. It's AB is what? AB is a alphabet of 26 letters. It means 26 alphabets. AB is a part of 26 alphabets. It means we can say that 26 alphabet is called a subset, okay. That is a major parts where this set is created. The whole major parts is called a subset. It means if you go for 1 2 3, 1 2 3 is what? 1 2 3 we can say that the 1 2 3 is a number, that may be a here a subset. What is whole subset? Whole subset is maybe a real number, maybe a integer, because 1 2 3 is a part of an integer, 1 2 3 part of a natural number. Natural number is also part of an integer, then we can say that is a integer is a subset. Either we can say 1 2 3 is also part of a real number. Yeah, it's a real number, that's a real number is also known as a subset. It means subset is what? Subset is a whole thing. Subset is a whole thing where the all the sets are created. That's called a subset. That is called universal set. There from where the all sets are created. It means if we take the small 3 sets like 1 2 3 4 and 4 5, okay. If we combine all 3 sets, if we combine all 3 sets 1 2 3 4 and 4 5, then we can say that universal set may be a 1 to 10, it's may be a 1 to 6, it's may be a 1 to 5, okay. From which these 3 sets are created, then this whole set is called subset. From where these 3 sets or small 3 sets are created, then whole set is called as आपके पास में universal set. That's called a universal set, okay. That's called a universal set. So now we discuss about the universal set. What is an universal set? Universal set is, what is the definition of universal set? पास से बेटा यूनिवर्सल सेट की यूनिवर्सल सेट किसको कहना, ओके. ये भी अपने पास में यूज आएगा. यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है यू और एक्स से. दो नोटेशन है, या इधर यू यूज़ करेंगे या इधर एक्स यूज़ करेंगे, ओके. देखो इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है. जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने पास में अपना आप देखा कि यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं. अभी यूनिवर्सल सेट क्या है? ऑल सेट्स अंडर द इन्वेस्टिगेशंस आर रिगार्डेड एज अ सबसेट ऑफ अ फिक्स्ड सेट. मतलब जितने भी सेट्स हैं किसी भी एक बड़े सेट से रिलेटेड होंगे, है ना. जितने भी छोटे छोटे से स्मॉल सेट है वो किसी एक बड़े सेट से रिलेटेड होंगे, तो उसको कहेंगे जो बड़ा वाला सेट होगा, दैट्स कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट. जैसे अभी बात कर रहे थे अपन 1 2 3, तो जो 1 2 3 इंटीजर्स है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है रियल नंबर से, जो बड़ा वाला है ना, रियल नंबर से, ओके. तो जो रियल नंबर होगा उसको अपन क्या कह सकते हैं? दैट्स कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट. जैसे ए बी है, ए बी क्या है? ए बी रिलेटेड टू 26 अल्फ़ाबेट, तो जो 26 अल्फ़ाबेट है वो क्या बन जाएगा आपके पास में? यूनिवर्सल सेट्स, ओके. तो रिलेटेड टू द सबसेट्स दैट इज अ फिक्स्ड सेट, दैट्स वी कॉल दिस सेट. जो फिक्स्ड सेट है हमारा उसको अपन क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट्स. ऑल सेट्स अंडर द इन्वेस्टिगेशंस आर रिगार्डेड एज अ सबसेट ऑफ अ फिक्स्ड सेट. मतलब किसी भी फिक्स्ड सेट से रिलेटेड जितने भी आपके पास में
सबसेट बन सकते हैं, इन्वेस्टिगेटेड हो सकते हैं, जितने भी सबसेट को अपन इन्वेंटेड कर सकते हैं, उस सेट को क्या कहेंगे, जिससे ये सारे सेट सबसेट बने हैं, तो वो बड़ा वाला जो सेट होगा उसको अपन क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। और वो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, आइदर यू या एक्स, दोनों में से किसी एक से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे। All integers or natural numbers or prime numbers are elements of a given sets। मतलब इंटीजर्स हो या फिर नेचुरल नंबर हो या फिर प्राइम नंबर हो, तो आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या बन सकता है, वो z बन सकता है, और वो क्या बन सकता है बेटा, रियल नंबर बन सकता है। तो जो बड़ा वाला सेट है वो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ओके, व्हेन वी डिस्कस अबाउट टू द ट्रायंगल्स, अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे, ओके, तो ट्रायंगल किससे रिलेटेड होगा, तो सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स जो है, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, वो क्या बन जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। व्हेन वी डिस्कस अबाउट टू द सर्कल, तो कलेक्शन ऑफ ऑल सर्कल क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। मीन्स ये जो छोटी छोटी स्मॉल सी पार्ट्स हैं, ये जिससे मिलकर के बने हैं, ओके, जिससे मिलकर के बने हैं, तो जो बड़ा वाला सेट होगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, जिसके भी सभी ये जो पार्ट्स हैं वो उसके क्या हो जाएंगे, पार्ट्स हो जाएंगे, तो उसको अपन क्या कहेंगे, दैट्स कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, यूनिवर्सल सेट। ओके, तो हमने पावर सेट देखा। यूनिवर्सल सेट का नोटेशन ध्यान रखना है, यू या एक्स, यू और एक्स दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरवल्स की। कुछ इंटरवल्स जो हमें ध्यान में रखने हैं, इंटरवल्स का बड़ी इंपॉर्टेंस है अपने यहाँ पे। कुछ इंटरवल है कि इंटरवल का ध्यान रखना है कि इंटरवल कैसे है, उस इंटरवल का ध्यान रखना है कि वो इंटरवल कैसे इंटरवल का मतलब क्या होता है, वो इंटरवल कैसे है, वो हमें ध्यान में रखना है। तो हम देखो स्टूडेंट्स, अपन बात करेंगे कुछ इंटरवल्स की, जो अपने काम के इंटरवल्स है, जो अपने यूज़ में आएंगे। इंटरवल्स है जो कुछ हमें देखने हैं यहाँ पे। इंटरवल एज ए सबसेट आर के कुछ इंटरवल्स हमें देखने हैं, देखेंगे कैसे कैसे इंटरवल्स होंगे। एक हमारे पास में लिखा है x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज लाई बिटवीन a एंड b। ओके, x की वैल्यू बेटा a से ज़्यादा है और b से कम है, इट मीन्स x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में लाई कर रही है। तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके का एक ब्रैकेट्स, एक इस तरीके का इंटरवल। ओके, तो इस तरीके का ब्रैकेट, जिसका मतलब होता है कि न तो a इंक्लूड है न b इंक्लूड है। कौन इंक्लूड है, इनके बीच की वैल्यू, ना a इंक्लूड है ना b इंक्लूड है, इसके बीच की वैल्यू इंक्लूड है, तो दैट्स कॉल्ड ओपन इंटरवल। इसको कहते हैं अपन ओपन इंटरवल, इसको अपन कहते हैं ओपन इंटरवल, जिसमें दोनों एंड की जो वैल्यूज होती है वो काउंट नहीं करते हैं, वो इंक्लूड नहीं होती है, उनके जो बीच में आपके पास में जो वैल्यू होगी वो काउंट होगी। जैसे आपके पास में 3, 4, 5 है, तो 3 और 5 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होगी 4, 4.1 दैट इज इनफाइनाइट वैल्यूज़, तो वो सारी की सारी काउंट होती है। इसको लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब आपको एक डॉट बनाना है ओपन वाला, एक डॉट बनाना है ओपन वाला, पहला आपका a है, दूसरा b है, और दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट रिप्रेजेंट अ ओपन इंटरवल। नेक्स्ट, अब देखो बेटा यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया, ये इक्वल टू का साइन है, दैट्स कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल। इक्वल टू के साइन को क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल, और इसको लिखने के लिए ये ब्रैकेट यूज करते हैं, ऐसे वाले, ये ओपन वाले होते हैं, दैट्स कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल। ओके, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज इंटरवल के लिए, यहाँ ओपन सर्कल बनाते हैं, यहाँ डार्कर सर्कल बनाते हैं। ये दोनों डार्कर सर्कल हैं, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक ए से लेकर के बी तक गया, ये हमारा काम हो गया, दैट्स कॉल्ड अ डार्कर सर्कल, ये डार्कर सर्कल, और इसको अपन क्या कहेंगे, क्लोज। क्लोज कब लगाना है, जब आपके पास में ये इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है तो क्या लगा देंगे अपन, ओपन इंटरवल, तो दैट्स कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल। थर्ड वन आता है आपके पास में क्लोज ऑन राइट साइड, कि राइट साइड से क्लोज है, राइट साइड से क्लोज, क्लोज का मतलब कब आएगा, जब इक्वल टू का साइन होगा, इक्वल टू का साइन है, तो हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से लिखेंगे, आधा ब्रैकेट तो ओपन वाला और आधा ब्रैकेट क्लोज वाला, जिसको क्या कहेंगे, क्लोज ऑन राइट साइड। ओके, राइट साइड क्लोज इंटरवल है। अब अपने पास इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अभी ओपन इंटरवल के लिए तो क्या बनाते हैं, ओपन सर्कल, और ये क्लोज इंटरवल के लिए क्या बनाते हैं, डार्कर सर्कल। तो एक साइड तो बनेगा ओपन और एक साइड बनेगा डार्कर, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगी, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, दैट्स रिप्रेजेंट अ क्लोज ऑन राइट साइड। दैट सेम वे द क्लोज ऑन द लेफ्ट साइड, क्लोज ऑन द लेफ्ट साइड क्या होगा कि आपके पास में क्या बनेगा कि इधर तो एक इक्वल टू का साइन है, तो उधर तो अपन बना देंगे आपका ये वाला ब्रैकेट, और जहाँ ओपन साइन है वहाँ बनाएंगे ओपन, दैट्स कॉल्ड अ क्लोज ऑन लेफ्ट साइड ब्रैकेट। तो जहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है दैट्स रिप्रेजेंट अ डार्कर सर्कल, और इधर क्या हो जाएगा, एक ओपन सर्कल, और उसको अपन आप यहाँ पे सेंड कर देंगे।
ओके तो ये हो जाएगा हमारे पास में कुछ इंटरवल। तो इंटरवल की वैल्यू है जो हमें ध्यान में रखनी है, ए बी की जगह कोई भी डिजिट हो जाएगी, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन आएगा कि कन्वर्ट इनटू द इंटरवल। तो इंटरवल में आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, आपको ये इंटरवल लिखने हैं कि कहाँ क्लोज लगाना है, कहाँ ओपन लगाना है, कहाँ सेमी क्लोज लगाना है, मतलब कहाँ क्लोज ऑन राइट साइड करना है और कहाँ क्लोज ऑन लेफ्ट साइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।